नॉट 100%, आई एज्यूम कि आपका इंशाल्लाह 90% तो प्रॉब्लम हल हो जाएगा ऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक के लिए वी हैव डिस्कस 2 डिटेल वर्कशीट और 3 आपको मैंने डिटेल दे दी हुई है। एक हमने कल शायद डिस्कस की थी। टुडे वी आर गोइंग थ्रू एन इम्पॉर्टेंट वर्कशीट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और इस फिजिकल केमिस्ट्री की वर्कशीट में वी विल ट्राई डिस्कस एवरीथिंग पॉसिबल जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में एग्जामिनर आपको टेस्ट कर सकता है आपका नॉलेज, राइट? So let's get started. If you have any question from the previous worksheet, please ask. No? Okay. So चलें जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना what do we call the physical chemistry, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. It's a detailed worksheet with 5 questions, important 5 questions. We will try to solve the थोड़े challenging वाले, बाकी आप लोग खुद करेंगे because ये 2 hours में पूरी होने वाली है नहीं। कहने के तो ये 1 hour में भी हो सकती है, बट जिस लेवल की एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए उसके लिए फिर मैं चाहता हूँ कि जरा डिटेल में आपको करवाया जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim. The elements in group 17 of the periodic table are called halogens. They form stable compound with both metals and non-metals. We know halogen react with non-metals, which react with hydrogen to form HCl, a stable compound. It does react with other compound to form stable other metals and non-metals to form stable compound. We are given with some of the melting points, boiling point of a simple halogen molecule with non-metal HCl and with a metal calcium. So you can see that both with, ये 85 when it is simple molecular, homoatomic hai. 188, I'm talking about the boiling point when it reacts with different atom hydrogen, polarity induced होगी, strong forces बनेंगी, strong intermolecular forces, PD forces बनेंगी, और यहाँ पे तो strong ionic bond बन जाएगा ना, because calcium is a metal and fluorine is non-metal. And we are also given with the relative formula mass, the MR of one molecule. State what is meant by the term relative formula mass. So for 2 marks, this is an important basic definition. So since it says relative formula mass, so हमने relative का मतलब we have to draw a comparison. The mass of a molecule relative to 1/12 the mass of carbon-12 atom or isotope. So 1 mark is for the relative mass, and the other mark for the comparison, 1/12 to the mass of carbon-12 isotope. Now let's look at the question related to the boiling point. Both F2 and HCl have the covalent bonds, right? Suggest why HCl have high and F2 has low for 2 marks. So first of all, you will identify the type of intermolecular forces, that what type of forces are present in F2 and what type of forces are present in HCl. Now, considering both are covalent, both are simple molecular, what are the varieties in simple molecular or covalent? में क्या varieties होती हैं? So it depends on the type of the molecule. So if the molecule is pure non-polar, this is non-polar. How do I know? दोनों में polarity का, both have the same strength to attract the lone, the shared electron. So इनके बीच में 2 electron share हुए हैं. ये fluorine भी इतना ही attract करेगा जितना ये fluorine is strong. तो the electron will stay right in the middle. It's a non-polar. Non-polar में कौन सी forces होती हैं? Induced forces, IDID forces. और IDID forces होती हैं बहुत weak. By the way, IDID forces की strength किस पे depend करती है? Number of electrons पे. तो अगर 2 लोग हैं जिन दोनों में IDID फोर्स है, तो आपने देखना है जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब मोर स्ट्रॉन्गर. लेकिन यहाँ पे तो IDID नहीं है. HCl तो पोलर मॉलिक्यूल है. हाउ डू आई नो? हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, क्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. एज यू गो अक्रॉस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. So इसके बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे आर मोर क्लोजर टू द क्लोरीन. So chlorine will become partial negative and hydrogen will become partial positive. It's a polar molecule. So polar molecule में क्या होते हैं? पोलर कोवलेंट में होती हैं PD फोर्सेस, और PD फोर्सेस ID से ज्यादा स्ट्रॉन्ग. यही लिखना है अपने आंसर. आप लिखेंगे HCl have stronger permanent dipole forces
permanent dipole, permanent dipole. Whereas F2 have simple, weaker induced forces in ID forces. So since PD forces are more stronger, more energy is required to break the PD forces as compared to the ID forces. Make sense, everyone? Yes. Okay. Now we have to explain why the calcium fluoride is so special that it has such high boiling point of 2773 degrees. Since calcium is a metal, it will be +2. And we have 2 fluorines, so fluoride ion here, and there is 1 fluoride ion here. So you see, there are strong forces between oppositely charged ions. Calcium ion attracts the fluoride ion. So इसकी जो attractor force है वो बहुत strong है, जिस वजह से इसको break करना बहुत मुश्किल है. So high energy is required. So we say इसको जब भी बेटे ionic bond की जो forces होती है उसको electrostatic forces कहते हैं. So calcium fluoride has a giant ionic structure, has a giant ionic structure with very strong electrostatic forces between oppositely charged ions. With very strong. Sir, in the exam, we are allowed to use ID and PD forces, right? Or do we have to properly induce dipole? I mean, it's better to write the full word, but you can write the ID forces. But I said it's better to write the full word, but ID is acceptable. Okay. So calcium fluoride has a giant ionic structure with very strong electrostatic forces between oppositely charged ions. So huge amount of energy is required. Right? Make sense, everyone? Now, calcium fluoride aqueous can be made by reacting calcium fluoride with HF aqueous. Right? The equation symbol equation का मतलब होता है, हमने उसमें कहा symbol भी लिखने, so हमने symbols भी लिखने. So HF aqueous reacts with calcium carbonate. Metal carbonate are always solid. So we get calcium fluoride. Salt का formula तो उसने पहले से ही बता दिया. By the way, जब भी salt बनाते हैं, metal kicks the hydrogen. So calcium is in group 2, fluorine group 7. So we know that we need to multiply. बहुत ही basic चीज है ये. CF2 ही बनेगा. साथ में we get CO2 and साथ में we get CO2. Oxygen should be of the same size as carbon. Otherwise CO लिखेंगे तो cobalt बन जाएगा. This is incorrect. And H2. So water is liquid, carbon dioxide is a gas, and this is aqueous. Is this a balanced equation? It's not. So let's balance the equation. How do we balance? We have 2 fluorines here. I need to put 2 over here. I think now it's a balance. Right? It was easy for 2 marks. Wow. Okay. So chloride ion, the configuration of chloride ion. Okay, so configuration for chloride ion. We know chlorine has 17 atomic number. So with chloride ion, it would have a -1 charge, 35.5 mass, which have nothing to do with electrons. So since 17 atomic number, 1 negative, 18 electrons. So कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, p6, 3s2, and 3p6. हो गया 18. Now, when Cl2 is passed over hot iron, FeCl3 is formed. So Fe, that is hot iron. इसमें chlorine का reaction करते हैं, वो कहते हैं जी FeCl3 बन गया. However, when iodine passes over hot iron, only FeI2. So when you do the same reaction with iodine, instead of FeI3, this time you get FeI2. So what is the difference in both of these reactions? The difference is, on the reactant side, everything is 0 because of the molecule. Sare molecule oxidation number 0. Here the iron goes +3, chlorine to -1. 3 of them are -3. So isme chlorine is reduced
act as an oxidizing agent. So chlorine is a strong oxidizing agent as it oxidizes Fe from 0 to +3. But look at the iodine. Iodine, compared to chlorine, iodine acts as a weaker oxidizing agent because it is only able to oxidize iron from 0 to +2. Because iodine is -1 here, so two of them are -2. So compared to chlorine, iodine is a weaker oxidizing agent. Weaker oxidizing agent, right? So state what would you observe during the reaction between Fe and I to explain why Fe2 is formed rather than Fe3. तो वो कहता है कि ये तो हमने explain कर लिया कि why FeI2 is formed, not FeI3. So पहले हम observation लिखें. Observation में हमें क्या नजर आ रहा है? देखो आयोडीन जो गैस होती है ना, आयोडीन का कलर क्या गैसियस फॉर्म. व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडीन? गैसियस. आयोडीन के मल्टी कलर्स होते हैं, उनके डिफरेंट स्टेट्स. आयोडीन नॉर्मली सॉलिड में क्या होता है? इट इज ग्रे ब्लैक सॉलिड. यहाँ पे तो आयोडीन गैसियस फॉर्म में है, तो इसका मतलब गैस का जो भी कलर होगा विद एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द वेपर्स विल डिसअपियर because as the reaction proceeds, that's what we'll observe. Iodine gas is purple. Purple, ye purple coloration. So as the reaction proceeds, the reactant iodine will form the product. So the purple color will disappear, vanish, khatam ho jaye. As the reaction proceeds, the purple vapors disappear. Purple vapors disappears. Now, why do you only get FeI2 instead of FeI3? As iodine is a weaker oxidizing agent, only able to oxidize Fe to Fe. So the word weaker oxidizing agent is very important. It is unable to oxidize Fe from Fe to Fe3. Okay, now part 3. FeI2 is soluble in water. A student carries out a chemical test to confirm the solution contains iron iodide. So वो कह रहा है कि वो उसको confirm करना चाह रहा है, कोई chemical test का पंगा करेगा उसके साथ. Or he want to test the iodine. We know that कोई भी halide होता है तो उसके लिए हम क्या use करते हैं? For any halide, we can use silver nitrate. First of all, we can add nitric acid followed by the silver nitrate ions. Identify the reagent the student uses, state the color. So acidify with nitric acid, then add aqueous silver nitrate, aqueous AgNO3. This is the reagent that we'll be using here, aqueous silver nitrate. So what color precipitate would you observe? Yellow PPT. Yellow precipitate of silver iodide are observed. As sometimes we need to distinguish, we need to confirm the presence of iodide. तो फिर हम क्या करते हैं? Further confirmatory test क्या है? Further confirmatory test है addition of ammonia. So if you add dilute ammonia, देखो 3 टेस्ट होते हैं, आपको तीनों के टेस्ट सेम है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड. To test, I mean the reagents are same for all three. Silver nitrate डालोगे, you will get white PPT. Silver nitrate डालोगे, you will get green PPT of bromide. And same silver nitrate डालोगे, you will get yellow PPT. अच्छा, ये तो आ गया when you add silver nitrate aqueous. इसके आपको मिलेंगे white. For this you will get cream PPT, and for this you will get yellow. But actually, when you will be forming the practical, it is very hard to distinguish white, cream, and yellow sometimes because of the freshly prepared precipitate. So what is the further confirmatory test? You add dilute ammonia. So with dilute ammonia, white PPT dissolve. If the precipitate dissolves, that confirm the presence of chloride. Chloride confirm.
If the PPT does not dissolve in dilute ammonia, either it contains bromide or iodide, then you will do concentrated ammonia. So in the presence of concentrated ammonia, the bromide precipitate dissolve in concentrated, not in dilute. And yellow PPT does not dissolve, even with dilute or concentrate. So they remain. So आपको further test भी याद होना चाहिए, part of our syllabus. Compounds containing iodide ion often contaminated by bromide. Thank you. Identify the further reagent. देखो उसने पूछ लिया ना further reagent. So to use the show, to add aqueous ammonia, add concentrated ammonia liquid, concentrated NH3. The precipitate of bromide will dissolve and iodide will remain. Okay, concentrated ammonia, PPT of AgBr dissolves and precipitate of AgI remains insoluble and does not dissolve. सबको समझ आ गई? So how do we test the further confirmatory test? You will add, if you're testing for bromide, you will add concentrated ammonia. Iodide के लिए करोगे तो वो dissolve ही नहीं होगा. आगे चलें. HOF is the only known molecule contains the element. So that's the only molecule याद रख लेंगे जिसमें तीनों लोग रहते हैं. Draw the dot and cross. ये तो बना लेंगे ना. How do we draw the dot and cross? देखो, oxygen being the central element. Oxygen के group 6 में it will share 2 electron. Fluorine group 7 में इसने एक ही शेयर करना है, तो एक ऑक्सीजन के आ गया, एक फ्लोरीन का आ गया. फ्लोरीन के पास बाकी 6 भी तो बचेंगे ना. ये फ्लोरीन के आगे बाकी सारा 6 आ गए, राइट. इसी तरह हाइड्रोजन, उसके पास तो होता ही एक का बेचारे के पास. तो हाइड्रोजन का ये, सो ऑक्सीजन ने एक शेयर करना है इसके साथ और हाइड्रोजन का एक. अब ऑक्सीजन के पास टोटल 6 थे, ठीक है. बाकी कितने बचे ऑक्सीजन के पास? ऑक्सीजन के पास अभी भी 4 बचे हुए. मेक सेंस एवरीवन? देखो सबके 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, उनके 8. Okay, now HF can be made by reacting fluorine with ice, H2O, at -40. The reaction is similar to the reaction of chlorine with cold water. So what is the reaction of chlorine with cold water? We need to know this. देखो, reaction of fluorine with cold water is part of our syllabus. So पहले वो वाला लिख लो. Chlorine with water, H2O. So what will you get? अगर हमने chlorine के साथ बनाएंगे तो you'll get HCl and HOCl. That is what we will get with when you react chlorine. So अब वो कह रहा है कि fluorine का भी यही है. Fluorine react similar, so reaction is similar. इसका मतलब ये है कि you just replace chlorine with fluorine, so H2O with you will get HF and you will get of course HOF. O should be capital. Is this a balanced equation? Yes, it is balanced because we have 2 fluorine, we have 2 hydrogen, 2 fluorine, 2 hydrogen on the both sides. I'm sure it was easy, but the reaction needs to be याद कर. इसमें कोई rocket science. HF is unstable compound, decomposes to form HF and oxygen. The reaction is exothermic because the enthalpy is negative. A fully labeled diagram acts to show the decomposition. Now, since it is exo, we need to draw reactant and then product like this. All right. So this is our reactant HOF, and it goes decomposing, forming the product HF and half O2. And then what's the activation energy? Activation is always from the reactant to the peak. That is our activation energy. And enthalpy is always from the reactant to the product. So arrow, make sure arrow goes away from the reactant. So this is your reactant. For activation, arrow goes from the reactant to the peak, and for enthalpy, it always towards the arrow direction, always toward the product. It always go from the reactant to the product, and mention that the enthalpy is -139 kJ per mole. So you'll get how many marks? 2 easy marks, right? I'm sure not missing. All right, for this question, everyone, we need to be very, very careful because this is regarding the hydrogen bonding, the all-important hydrogen bonding. What is hydrogen bonding? A strong type of permanent dipole force
in which the partial positively charged hydrogen atom of one molecule attracts the neighboring nitrogen, highly electronegative, oxygen, highly electronegative, or fluorine. So whenever nitrogen of one molecule attracts the nitrogen of neighboring, oxygen of neighboring, NOF, all of these three elements, they have the lone pair and they are highly electronegative. They attract the partial positive charge. So between positive and negative, there are strong forces, and due to the same reason, those molecules which have hydrogen bonding, they have relatively high melting and boiling point than those which do not have any such intermolecular forces. Pure HF is colorless liquid at 273. 273 Kelvin is actually 0 degree. Because if you convert degree to Kelvin, you add 273, and Kelvin to degree, you subtract 273. So subtract 273 from 273, you get 0. But 273 Kelvin is actually 0 degree. The liquid contains HF molecule has a strong hydrogen bonds. Draw fully labeled diagram. See the box. देखो आपने HF का molecule draw किया, एक और HF का molecule draw कर ली, between two उसने कहा, तो दो HF के लोग draw कर लिए आपने. Hydrogen is always partial positive, fluorine is partial negative. अब इसके बीच में आपने इस तरह forces show कर देनी और label कर देना है hydrogen intermolecule between the molecules. So intermolecular force. तो two molecules हैं, हमने draw कर दिया. ये जो bond होता है ना, bond, that is called intramolecular, intra, within the molecule. But the dotted line shows the hydrogen bond, and due to the strong force of hydrogen bond, it is very difficult to break the forces. That's why it is liquid. Apart, I mean, इसी group के जो दूसरे लोग हैं वो gases होते हैं normally, का melting point लोग हैं, right? उसके बाद आगे चले. अच्छा, यहाँ पे एक चीज का और भी ख्याल रखना है कि फ्लोरीन के लोन पेयर शायद मैं नहीं लगाए, फ्लोरीन के लोन पेयर्स भी आपने शो करना, बिकॉज लोन पेयर आर व्हाट रिस्पांसिबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और फ्लोरीन ग्रुप 7 के लोगों के पास 3 लोन पेयर होते हैं, राइट? सो आपने लोन पेयर मेक श्योर कि आप लोन पेयर शो करने हैं. Interhalogen compounds such as BrCl or interhalogen के halogen के लोग आपस में दोस्ती कर रहे हैं, contain 2 or more different halogen atoms that are covalently bonded. 2 या 2 से ज्यादा different halogen atoms हो सकते हैं. For example, इसमें IF5 है. So 5 fluorine bonded to 1 iodine and 1 bromine bonded to 1 chlorine. So interhalogen compound. These are interhalogen compound contain only 1 fluorine and 1 fluorine. So CLF कह सकते हैं इसको, FCl भी कह सकते हैं. Now D at 0 degree, that is temperature, this much pressure and this much volume, which is 1 decimeter cube, this much volume, it has this much mass. Use the general equation to calculate the MR. So very easy, boys and girls. I'm sure आप सबको general gas equation आती है. General gases PV is nRT. Before we start with the general gas equation, I want everyone to learn the standard unit that we use in general gas equation. So P is always represent the pressure, which is made in Pascal. Volume is made in meter cube, and number of mole is of course ये तो MOL है. R is 8.31 and temperature should be in Kelvin. Okay, temperature तो Kelvin में ही होना चाहिए, ऐसा ही. Let's use the same formula. mass and gram, moles का mass हमेशा gram में ही होता है. So moles को आप अभी हम इसमें substitute करेंगे. We know mass number of mole is m over mr. So since हमने तो इसमें mr find करना है, तो let's substitute. Let's plug in the value in the same formula. So PV is basically m over mr RT. Since we need to get the mr, तो mr को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, PV इधर ले आएंगे, अभी कर लेते हैं. mr is basically equal to m RT over P. So this is our standard form. So mr हमने, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके राइट space. Okay, now mass is given, which is how much? 4.13. mr is 4.13. I mean, that's the mass. R is 8.31. Temperature is degree Celsius. Let's add 273.
तो ये बनेगा 273 ही बनेगा. So multiply by 273 over. Pressure is already in Pascal, that is 101,325 Pascal. That is already in the Pascal standard unit. But volume is in decimeter. So, you know, centimeter to decimeter and decimeter to meter. So basically, centi से deci में जाओगे तो you'll divide with 10 raised to power 3, which is divide with 1,000. यहाँ से इधर जाओगे तो divide with another 1,000. वापस आना है तो आप सेंटी से अगर डायरेक्ट इधर जाना है तो डिवाइड विद 10 raised to power 6. अब हम जा रहे हैं डेसी से मीटर में, तो यू सिंपली डिवाइड विद 10 raised to power 3. जब इसको 10 raised to power 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग वॉल्यूम को, दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब, तो वो 10 raised to power जो डिवाइड किया वो ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 into 10 raised to power minus 3. 1 dm cube is actually 1 into 10 raised to power minus 3 meter, right? So please do the maths. I have the calculator right here. I'm sure आप सब लोग मेरे साथ करेंगे. 4.13 times 8.31 times 27. It's 90. That's the complete answer, Saad? Is the complete answer? MR3? If anyone can check the marking scheme. इसकी मार्किंग स्कीम अटैच है, जल्दी से कि बच्चा नीचे जाके चेक करे. 2 decimal places लिख दो ना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 decimal places यूज किए हैं, so we should use 2 decimal. So आगे what's the answer in 2 decimal places? In 2 decimal places, it's 92.46. So it says 92.46. But the question is not important. These units are. बिकॉज आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला ना, आ भी सकता है, हमें एग्जैक्ट सेम के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होनी चाहिए. वी शुड नो द फार्मूला, हाउ टू रीड इट, हाउ टू गेट द स्टैंडर्ड यूनिट, एंड देन हाउ टू प्लग द वैल्यूज टू गेट द राइट आंसर. ओके, नाउ हो गया, यही आंसर है ना? आई मीन 92.46 इज द करेक्ट आंसर. यस सर, मार्किंग स्कीम में 92.4 या 92.5 लिखा हुआ है. Use your answer to 1 to determine the molecular formula of the. कर लेते हैं. उसने कहा कि it's a compound of chlorine and fluorine. अब देखो यार, क्लोरीन और फ्लोरीन को हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि इसका आंसर आए 92.45, मतलब इसके पास आए 0.5 के डिफरेंस से. So we know chlorine is 35.5 and fluorine is 90. अब आपने इसको गेस मारे कि कितने हम 19s ऐड करें और कितने फ्लोरीन्स के साथ इसको एडजस्ट करें कि 92 पॉइंट, चलें एवरेज हम कर लेते हैं 92.5. इसका मतलब ये है 0.5 का मतलब ये है कि जो क्लोरीन है वो ऑड नंबर है, या क्लोरीन 1 है या क्लोरीन 3 है. अगर क्लोरीन 2 होते तो 0.5 आंसर का. सो मैं क्लोरीन ले लेता हूं 3 फॉर एग्जाम्पल. नहीं 3 लूंगा तो ये सारे तो यही बन जाएंगे. सर CFL3 ले लें, I mean ClFL3. हाँ, ये हो सकता है कि 19 times 3 कर लें प्लस 35. ये 19 times 3, that is 57. 57 plus 55. या तो बिल्कुल यही बन रहा है, 92.5 एग्जैक्ट आ रहा है. तो इसका हम लिख सकते हैं ClF3. तो फॉर्मूला इज Cl. देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस में स्कैम होने के चांसेस हैं, बट विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड आप इसको सही गेस कर सकते हैं. सिंस देयर वाज 0.5, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन इज इन ऑड नंबर, या 1 है या 3 है. अगर हम 3 क्लोरीन ले लेंगे तो ये 35.3, ये तो 100 से ऊपर चला जाएगा. तो इसका मतलब क्लोरीन एक ही है, बाकी सारे फ्लोरीन. मेक सेंस एवरीवन? से यस. कोई बात नहीं ना, तो यस. गुड. सो 3 oxides NO, NO2 and N2O can be formed under different conditions. Complete the table oxidation numbers.
तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ ऑक्सीजन तो हमें पता -2 है, तो ये वाला नाइट्रोजन पे +2 ही होगा। ऑक्सीजन -2 है, एक ऑक्सीजन, 2 ऑफ देम आर -4, तो ये वाला एक ही नाइट्रोजन है, तो ये +4 होगा। आप रोमन में भी लिख सकते हैं, लेकिन यही ठीक है। So nitrogen can form by reacting. NO2 can be formed by different chemical reactions. Thank you. Write the equation for the formation of NO2 by N2 and O. तो ये तो कौन सी रॉकेट्स, बस ये लिख दो, NO2 लिख दो। अब इसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करें? इससे आसान चीज तो पूछ सकता है, कैसे बैलेंस करें? इधर एक नाइट्रोजन है, इधर 2, इसको हाफ कर दो, बैलेंस हो गया। अगर आपका दिल नहीं करता हाफ करने को, सर ये कैसे? तो आप सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी बैलेंस होगा। अब वो कह रहा है कि द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो टू थर्मली डीकम्पोज मैग्नीशियम नाइट्रेट, पहले तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्नीशियम इज +2, नाइट्रेट इज -1, सो 1 यहाँ 2 यहाँ, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा M नाइट्रेट। दिस इज व्हाट मैग्नीशियम नाइट्रेट। थर्मल डीकम्पोजिशन में कोई ऑक्सीजन कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल उसी को हीट करना है। Whenever you decompose group 2 nitrate, you get the oxide of the same metal, which is solid. Nitrate, of course, solid होते हैं, यहाँ पे चाहिए नहीं, आपको बता रहे। You get a brown gas and you get a colorless gas. So you'll get a mixture of gases. अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करें? So we have 2 nitrogens here. यहाँ पे एक है, तो यहाँ 2 लिख लिया। जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो ऑक्सीजन के पास आ जाए जरा। ऑक्सीजन, magnesium is same, nitrogen are same. Let's look at the oxygen. We have 6 oxygens on the reactant side because 2 nitrate, this 3 will multiply with this 2, so 6 oxygens. यहाँ पे कितने? 2 2s are 4 and 2 6 और एक 7। इस साइड पे भी 6 करना है, तो बड़ा आसान काम, इसके साथ हाफ लिख देते हैं। बैलेंस हो गई ना, बैलेंस हो गई, बस सबको समझ आ गई। इसको ऐसे ही याद करें। अगर इसके ऑब्जर्वेशन पूछेगा, आप कहेंगे एक तो सॉलिड, व्हाइट सॉलिड बच जाएगा आपके पास, और जो ब्राउन गैस है वो इवॉल्व होगी। यू नो ऑक्सीजन तो कलरलेस है, ऑक्सीजन का तो कलर नजर नहीं आएगा, सो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ गैसेस, वन ऑफ देम इज एक्चुअली ब्राउन। Okay, so molecule of N2O can be formed by reaction between nitrogen and oxygen. The bond between nitrogen and oxygen atom represented by an arrow called coordinate. Dekho, this is how you represent your coordinate bond. Arrow from the donor to acceptor. And look at this. This bond is coordinate. The enthalpy change for the reaction is this. The delta H is given. That is positive 82 kilojoule. The bond enthalpy. Calculate the bond enthalpy of NO in kilojoule. Use the data book. So, अगर कोई बच्चा जल्दी से डाटा बुकलेट भेज दे, ये तो बड़ा आसान कैसे? डेल्टा एच is actually enthalpy of reactants minus enthalpy of the products. So नाइट्रोजन की भी आपको गिवन होगी डाटा बुकलेट से, ऑक्सीजन की भी निकाल लेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन हमें पहले से गिवन है, ठीक है, और ऑक्सीजन की हमने निकाली NO, तो 2x करेंगे क्योंकि 2 लोग बने, और डेल्टा एच ओवरऑल हमें गिवन। अगर कोई बच्चा बुकलेट शेयर कर दे तो हम इसको भी कर सकते हैं। बाय द वे, आई एम श्योर आपको लॉजिक मिल गई है। The bond enthalpy is the enthalpy change of reaction. No, bond enthalpy is the energy required to break 1 mole of bond to get the gases. तो enthalpy होती है वो ओवरऑल रिएक्शन की एनर्जी होती है। कर लेंगे इसको, आगे चलें। अगर आप डाटा बुकलेट मुझे शेयर कर दें तो मैं आपको कर देता हूँ। आई एम श्योर आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आप कर लें। यस, सो दैट इज द एंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इट वाज अ डिटेल्ड क्वेश्चन which was not that hard, not challenging, but sometimes easy questions are difficult, are very hard to answer because most of the students write the casual answer, but examiner is actually waiting for your casual answers and he will, you know, जो लोग casual answer लिखेंगे वहाँ पे marks काटेंगे। तो try to give the answer जिस तरह उसने पूछा हुआ है, बिल्कुल क्लैरिटी से। कोई आपने वहाँ पे एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है आपको। मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो जस्ट बी वेरी क्लियर, ड्रॉ वेरी क्लियर कंपैरिजन, mention the type of forces and say and mention that this one is stronger, this one is weaker. उसमें देखो मेल्टिंग पॉइंट को क्वेश्चंस पूछेंगे, आगे चले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे, ऑब्जर्वेशन पूछेंगे। सो मेक श्योर रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली बिकॉज स्टेटमेंट में ही आधा आंसर है, क्योंकि स्टेटमेंट को अगर आप समझ जाओगे, यू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू विल गेट द हाफ ऑफ द आंसर। जिस तरह यहाँ पे आयोडाइड को हमने कंफर्म, ऑल्दो यहाँ क्वेश्चन आप सिलेबस पढ़ोगे सर ये तो था ही नहीं,
ये तो अजीब सी चीज है. Everything is there. The idea is there. You just need to use your brain, read everything, and get the answer. It was an easy question, in my opinion. I think it 20 plus marks tha ek question. Let's start with the second question. The element sodium to chlorine in the third period for all oxides, all form oxides. Draw the diagram to show the shape of the molecule. So we have to draw to show the shape. SO3 and ClO2, name each shape. SO3, तो जल्दी से आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से 4 marks आएंगे. 4 marks, around 7% of the total. जल्दी से सब लोग ड्रॉ करेंगे, शाबाश. SO3 बनाना है आपको. बना लिया सब ने? So sulfur is in group 6 of the periodic table. Oxygen भी उसी group में. Sulfur exception है to the octet. ये पढ़ा हुआ है हमने. Because ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन yes sharing में डालेगा. तो यहाँ पे जो bond angle बनेगा that is going to be 120 degrees. And the shape, क्या लिखा हुआ? Shape का लिखा हुआ name. तो trigonal planar. Right. ClO2, oxygen is the central atom. क्योंकि ऑक्सीजन 2 शेयर करेगा. एक क्लोरीन है तो एक ही शेयर करना है. तो आप अगर इसको स्ट्रेट चेन बनाओगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं. दोस लोन पेयर विल रिपेल द बॉन्ड पेयर. तो यूं बनाने हैं, वेरी सिमिलर टू वाटर. Because hydrogen share 1 electron, so does the chlorine. So hydrogen and the group 7 element are very similar when they are not the central atom. Right? So we have the 2 lone pair on oxygen like this. You have to show the link. So what shape is this, by the way, and what's the bond angle here? The bond angle here is going to be 104.5 degrees. And it should be bent shape. Shabash to those who answer here. Or you can also shape this in non-linear. Sir, can we call this as V-shaped? Bent shape, I've never heard V-shape. Bent shape. सर वो हमारे स्कूल के नोट्स में तो वी शेप है, मगर ओके सही है, बेंट शेप ही कह लेते हैं. बेंट ही कह दो, क्या यार वी शेप में पढ़ के फिर पंगे में पढ़ना है के बाद में. यस एक्सेप्टेबल. ना कोई बेंट और वी शेप वैसे भी सेम नहीं होती, लेकिन मैंने मार्किंग स्कीम में वैसे कभी पढ़ा नहीं, ना एग्जामिनर रिपोर्ट में. इट्स बेटर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, राइट व्हाटएवर इज आस्क्ड. ओके, नाउ explain why the melting point of MgO is higher than Na2O. ये बड़ा मजे का क्वेश्चन. देखो दोनों ही आयनिक हैं. I mean magnesium and oxygen both are like, one is metal, oxygen is non-metal. So magnesium would carry +2 का charge, oxygen would have -2, and so does sodium. Sodium would carry +1 का charge, and oxygen would have -2. Now, the similar thing between two is like this thing, the oxide, and that means that it is not going to affect the melting point in any way. So different चीज है, वही difference पंगा करेगी. The difference between these two compounds is the cation. One has magnesium and other one is sodium. It says magnesium has high, इसका melting point high है. इसका melting point relatively low है, वैसे high होता है लेकिन उसके comparison में low है. तो पूछ रहा क्यों है? अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब इसकी फोर्सेस स्ट्रांग है. फोर्सेस स्ट्रांग क्यों है? इस वजह से हैं. लेट्स कंपेयर द मैग्नीशियम एंड सोडियम नाउ. यू नो मैग्नीशियम एंड सोडियम बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड नेक्स्ट टू ईच अदर. सोडियम पहले रहता है और मैग्नीशियम बाद में रहता है. They both have the same amount of electrons in the valence shell in the ionic form. So, but magnesium have more protons in the nucleus. So the cationic radii of magnesium would be much smaller. If this is sodium ion, right? If this is the size of sodium cation, this would be the size of magnesium, because cationic radius decreases as you go across. Now, which is smaller in size? Magnesium. So magnesium has smaller ionic radii. Smaller ionic radii.
So with smaller ionic radii, you should say, so it has a greater charge density. And great, पहले आप देखो ना इस पे +1 चार्ज, इस पे +2. So also इस पे दो reasons हैं. इसका charge भी ज़्यादा है, इसका size भी small है. So it has a greater charge density. Also, it has a greater magnitude of charge. Also, it has a greater charge. So it will attract, therefore, it will cause stronger attraction for the anion, oxide ion. So more energy is required. Do mention the thing energy as well. More energy is needed or required to break the magnesium oxygen bond compared to sodium oxygen because of the smaller ionic radii, because of the greater nuclear greater charge density, and because it has a greater magnitude of the charge. It has +2, and this has, and then finally you should mention the word energy, the sentence regarding energy, that if it has everything strong, perfect, it requires more energy compared to the one which has less energy. Next, why it has some Si2 has higher than that of SO3. SO3 इन दोनों में अब कंपेयर करते, पहले आयनिक कंपेयर किया था, कोवेलेंट कर लेते. या मेरी बात सुनो, ये भी कोवेलेंट है नॉन मेटल, और दूसरा भी कोवेलेंट है. This pigeon is also covalent. But what is the difference? Why silica has high? Of course, we know that there are three people in our syllabus. One is graphite, we have diamond, and we have silica. Both of them are the carbons, just slightly different with the structure. This is SiO2. So it has a giant covalent structure. Has a giant covalent structure with very strong covalent bonds. Huge amount of energy is required. So, huge amount of energy is needed to break the bond. Compared to, relative to SO3, which have a simple molecular structure, weak intermolecular forces, पूरी बात लिखनी है आपने. So lesser, बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए. जब एनर्जी थोड़ी चाहिए तो ऑफ कोर्स उसका मेल्टिंग पॉइंट लो ही होगा. लेकिन मैंने बताया इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये द सेम टाइम इजी क्वेश्चंस के साथ ये स्कैम भी है. सो मेक श्योर कि आप स्कैम से बच जाओ, और जो चीज उसने एक्चुअली पूछी आपने उससे. तो यू कैन ऑल्सो मेंशन, बाय द वे, यहाँ पे आप सल्फर ट्राइऑक्साइड में you should mention the word type of intermolecular forces, the IDID forces. It has weak IDID forces, उसकी forces जो है वो बहुत strong. Okay, next question everyone. This is about equilibrium and shifting of equilibrium. Sulfur trioxide is produced by a reaction between dye and oxygen in a contact process. I mean, industrially हम इसको contact process में बनाते हैं, and eventually इस process में हम क्या बनाते हैं? We make sulfuric acid out. A dynamic equilibrium is established. Now, sulfur dye reacts with oxygen to form sulfur dye. The reaction is exothermic, and in this very reaction, we use vanadium oxide as catalyst, and we need 450 degree, and we need 2 atm ionic pressure. Very little pressure is required. Explain why increasing the total pressure and at a constant temperature increases the rate of the reaction. So, why a pressure would increase the rate, and what effect does it cause to the yield? So we know whenever you increase the pressure, it shifts the equilibrium to the side with the fewer moles of gas to compensate the effect of high pressure. Now imagine how many moles of gases on the reactant side, the moles of gases.
We have 2 of sulfur di, 1 of oxygen. So we have 3 moles. देखो इसके 2 moles हैं और इसका 1 mole. So we have 3 moles of gases on the reactant side. And we have only 2 moles of gases here. Make sense, everybody? So when you increase the pressure, it goes from high to low. लेकिन उसने तो हमसे पूछा है, अच्छा उसने तो रेट पूछा है ना, तो रेट में रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन से रेट तो बढ़ेगा, इट विल इंक्रीजेस. पहले हम रेट की बात कर लें, यील्ड की बात नहीं करेंगे. एज मोर प्रेशर cause the particle push closer, cause the reactant particle pushes closer, more particles in unit volume, more number of particles in a unit volume, greater frequency of effective collisions. Greater, so this is very important. Those senior citizens को तो पता है, सेंटेंस में बहुत स्ट्रेस देता हूँ कि आपने ये लिखना है. Whenever the question is about rate, do mention the word frequency, greater frequency of effective collisions. So the rate definitely increases. Let's talk about the yield. So when you increase the pressure, equilibrium goes to the side with the lesser moles of gas, and we know that on the right side we have lesser moles of gas. So right side पे जाएगा तो what will you get? You will again get more sulfur tri. The yield will increase. It will increase. As there are lesser moles of gas, there are fewer lesser moles of gas on the product side. Now let's give the reason. To compensate the effect of high pressure, to compensate the effect of high pressure, forward reaction is favored. Forward reaction is favored and more products are made. Make sense, everyone? Yes. All right. Let's look at this, which is very important and a very good question, I believe. So the reaction, the graph shows how the concentration of all, let me write the reaction here. SO2 basically reacts with oxygen in a reversible reaction to get you SO3. Here is the balanced equation. This is the balance. Now, if you see, if you look at the equation, the balance equation, 2 moles of sulfur dye would react. 2 लोग react करेंगे, मतलब वो use हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, with 1 mole of oxygen. So 2 moles of sulfur dye would react, would consume with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of sulfur dye. इसका मतलब है जिस स्पीड से सल्फर डाई कम होगी, ऑक्सीजन उसका हाफ कम होगी, क्योंकि इसके 2 इसके 1 से, ये बात आपको समझ आनी चाहिए. देखो इसके 2 मोल्स इसके 1 से रिएक्ट करते हैं, तो इसके 2 लोग कम होंगे, इसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा स्पीड से ये नीचे आएगी इसकी लाइन कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो इसी को जरा हम देखते हैं, आप देखें जरा सब लोग. और जिस स्पीड से सल्फर डाई की लाइन नीचे आएगी, बिल्कुल उसी स्पीड से सल्फर ट्राई बनेगी, क्योंकि उनकी रेशो सेम 2:2 रेशो. आगे चलो देख लेते हैं इसकी सारी स्टोरी. This is concentration of sulfur tri, which is increasing. See, it's increasing here. And this is sulfur dye, which is decreasing. So आपको लग नहीं रहा है जिस स्पीड से वो जा रहा है बिल्कुल उसी स्पीड से, they're exactly the same. जिस स्पीड से वो नीचे आ रहा है बिल्कुल उसी स्पीड से ये बढ़ रहा है. लेकिन जो ऑक्सीजन है वो तो बहुत इनसे हाफ कम हो रही है. जिस स्पीड से सल्फर ट्राई कम हो रही है, ऑक्सीजन उसके हाफ कम हो. तो ऐसा क्यों है, हमने बता देते हैं. Explain why the gradient of di and tri line decreases with time. तो क्यों कम हो रहा है for 2 marks? So why the gradient decreases? Because the reaction में जो reactant है वो use हो रहे. So as the reaction proceeds, as concentration
उसने सिर्फ ये पूछा कि ग्रेडियंट कम क्यों हो रहा है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट यूज होके क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे, मतलब रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बन। एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, as the reaction proceeds, the concentration of both reactant decreases. As the reaction proceeds, the concentration of both reactant decreases. अच्छा, फिर आपने बताना है कि सल्फर डाई डबल से जा रहा है। सल्फर डाई concentration decreases more rapidly than oxygen. As you know, अगर आप exact mention reason कर लें तो वही सबको हजम होगी बात। It was an easy 2 marks. Explain why all 3 lines become horizontal. That's important. मुझे ये बताओ, just a second one. Once the concentration was changing initially, यहाँ के बाद, इसके बाद अगर आप गौर से देखो this part of the graph, if you look at this part of the graph, the lines become horizontal. So what does it mean? Anyone in the class? What does it mean? Why the lines become horizontal after a few minutes or after some time? Yes. Shabash. Sir, equilibrium would. I'm in equilibrium, we know that since O levels, that as the equilibrium is established, the rate at which sulfur dye is formed, must be equal to the rate at which the reactants are formed. So अब तो concentration, आपको याद है हमने feature पढ़ा था एक of equilibrium, that at equilibrium the concentration of the reactant and product does not change once the reaction has achieved equilibrium. मीरे अगर आप हैं हमारे साथ. Yes, Maham. Sir, for this reaction, why can't we say that because its exothermic temperature decreases and it favors forward reaction? So that's why the reactants. So, I mean, whenever we talk about, yeah, I got your point. Whenever we talk about exothermic reaction, we must have to, disturb the temperature. Only the temperature, I mean, change in temperature can affect the enthalpy of the reaction. I mean, the shifting of thing. Here we are not changing the temperature. अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे होते तो मैं आपकी बात ठीक मान लेता। यहाँ पे हम हम कोई टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहे ना। So as the reaction, वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल क्यों होगी? As the reaction is at equilibrium, reaction has achieved equilibrium. Achieved dynamic equilibrium. पूरी बात होती है। Dynamic equilibrium. The rate of the forward and backward are equal. The rate of the forward and backward are same. So the concentration stays the same. Suggest a reason. We need to suggest a reason why the initial gradient of sulfur dye is steeper than oxygen. Because the ratio of the sulfur dye and oxygen is 1:2. We know that's 2 moles of sulfur dye would react with 1 of oxygen. So as in the balance equation, chemical equation, 2 moles of SO2 reacts with 1 mole of oxygen. So sulfur dye decreases more rapidly as double the sulfur dye is used with half of the oxygen. So you can mention this as well for 1 mole. This is important part D. Let me see the time कि क्या हो रहा है। थोड़े से स्लो तो नहीं चल रहे आज, पता नहीं क्यों। I'm sure आपको समझ आ रही है। So 2 moles of SO2 with 2 moles of oxygen. ये बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन। In a sealed container,
प्रीवियस पार्ट में बेटा मैंने ये कहा है कि देखो अगर उसने कहा है कि YSO2 की लाइन इज मोर स्टीपर, YSO2 is more steeper and not the oxygen. Oxygen is less steeper because more sulfur dye is 2 moles of sulfur dye react with 1 of oxygen. तो सल्फर डाई की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जल्दी डिक्रीज होगी क्योंकि उसको 2 लोग चाहिए ऑक्सीजन के एक के साथ. Yes, that's why more sulfur dye is used with half of the oxygen. So 2 mole of this, 2 mole of this are initially reacted with 2 of this. ये उसने कहा कि इसके दो से हमने react करवा दिए. But deep down we know the actual ratio. We know that 2 moles of sulfur dye can only react with 1 of oxygen because of the balance equation. इसका मतलब ये कि अगर इसका एक रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का तो 1 मोल बच जाएगा, इसका कुछ भी नहीं बचेगा, इसका 1 बचेगा. और अगर इसके 2 रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 बनेंगे, इसका मतलब इसके 2 बनेंगे. Those are the moles at equilibrium that you will have. लेकिन अब देखते हैं आगे कहता क्या. 2 moles of sulfur dye reacts and 2 moles of oxygen are sealed containers, suitable catalyst, constant temperature and pressure. Resulting mixture contain 1.9 moles, 98 moles of oxygen. अब उसने कहा कि we have जो इक्विलिब्रियम आया उसमें जो सल्फर ट्राई है उसके मोल्स हैं 1.98. अगर यार इसके 1.98 बन रहे हैं, देखो अगर इसके 2 बन रहे हैं तो इसके 2 यूज हो रहे हैं, इसके 2 यूज होंगे, इसके 2 माइनस होंगे, इसके 2 प्लस होंगे. अगर इसका 2 रिएक्ट करेगा इसका ऑक्सीजन का तो 1 रिएक्ट करेगा, है ना. अगर इसके 1.98 बन रहे हैं तो 2 में से इसके 1.98 रिएक्ट कर रहे हैं. तो अगर इसके 1.98 रिएक्ट किए तो इसके बचे कितने कितने बचे. बात है समझ ये नहीं. इसका एक और भी बड़ा आसान सा मेथड हम कर सकते हैं, लेकिन ये जरा देख लें आप लोग, इसका बहुत आसान चीजें निकलती हैं. So these are the moles of sulfur dye which are left at equilibrium. सल्फर डाई के पता चल गए मैंने कैसे निकाला. अब अगर इसके 1.98 रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के कितने रिएक्ट करने चाहिए ये तो जरा मुझे बताओ. मेक श्योर कि यू यूज द करेक्ट लॉजिक. इसके 2 इसके 1 से रिएक्ट कर, तो अगर इसके 1.9 रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके उसका हाफ रिएक्ट करेंगे ना 1.9 का, क्योंकि इसका 2 इसके 1 से रिएक्ट कर. So 1.9 half is something 1.98 minus divide by 2 कर ले. 1.98 over 2 तो 0.99. So इसके 0.99 इसका 1 था हमारे पास, 1 was the total mole of oxygen, उसमें से 0.99 इसके रिएक्ट करेंगे तो बचा कितना. ट्रस्ट इश्यूज 1 minus 0.99. इसके बच गए 0.01. ये बात सबको हजम हुई बात. Yes, yes. How to get the moles of everything at equilibrium? Now these are the moles of everything at equilibrium. 1 तो टोटल था तो 1.01 कैसे बच गए साथ में. ऑक्सीजन का तो है ही नहीं, ऑक्सीजन के तो 2 मोल्स है. अपॉलॉजीज. या ऑक्सीजन के 2 मोल्स है तो 2 में से हमने माइनस करना है, 2 में से तो 1.01. माय बैड. So 1.01. These are the moles of all the reacting product. Equilibrium में पूछा क्या उसने तो आसान चीज पूछी होगी, हमने तो बहुत मजदूरी करी. Write the expression. KC expression लिखना है तो KC में क्या लिखते हैं. You write sulfur tri. मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा उधर ले जाता हूँ क्योंकि अगले पार्ट में हमारे काम है. यार ये मेरी बात सुनो कि हम इसमें लिखेंगे सल्फर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है ना, तो सल्फर ट्राई इज द प्रोडक्ट जो भी कोफिशिएंट है रिटन इन द पावर. द अदर रिएक्टेंट आर सल्फर डाई, कोफिशिएंट इज 2. ऑक्सीजन को ऐसे लिखेंगे, देयर इज नो कोफिशिएंट. ये सबको आता है, मुझे भी आता है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन मोल्स ऑफ सल्फर डाई एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर. तो वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सल्फर डाई के मोल्स हमने कैलकुलेट किए. हाउ मच नॉट आप यू कैन शो द वर्किंग एज वेल. उसने कहा ऑक्सीजन के मोल्स एट इक्विलिब्रियम पूछा. इक्विलिब्रियम पे हमने इसके मोल्स फाइंड किए हैं. हाउ मच 1.01. So 1.01 here
0.02. Use your answer to D1 and 2 Kc values. Find the Kc's. इसका Kc find कर ले. We know that sulfur tri, yes बेटे पूछे. Sulfur di part 2 है, sulfur di O2 and oxygen. We know the concentration of everything. The concentration, I mean वो तो moles है ना. अब हमें लगाइए concentration. इसका volume कितना है? What is the total volume? What is that? देखो concentration हमने लगानी है वहाँ, तो हमें volume भी पता होना चाहिए. Concentration का formula किसी को याद है? Concentration is moles over volume. ठीक है. So we need to get the concentration. हमें सबके moles पता है. मैं जल्दी से concentration निकाल लेता हूँ यहाँ पे साइड पे. So sulfur tri ये सबसे पहले निकालते हैं. इसके moles से 0.02 और volume उसने दिया 40 cm3. That is the volume. So इसको dm, अच्छा 40 dm ही है ना पहले से. इसको हम 40 से डिवाइड कर देते हैं. जी पूछिए इसका क्वेश्चन. Yes. Sir, when they ask equation, expression of Kc लिखें, but they haven't asked us to write units, so we'll just write the expression and we won't write the units in the expression. Yes, we won't write the units. Yep. So for sulfur tri, the concentration is 5 into 10 raised to minus 4. For sulfur di, since sulfur di के moles हैं, ठीक है किया नहीं. Sulfur tri के 0.02 कर दिया. Sulfur tri है 1.98 like that. Sulfur di is 1.98. 1.98 over 40. That gives me 0.0495. So 0.0495. This is for sulfur di. Make sure कि आपने इसका square लेना है. Is that is what we need to do here. अच्छा. For sulfur di, it should be 0.02 over 40. देखो पहले भी किया था. 0.02. ये इसके moles हैं भाई. Over 40. 5 into 10 is to minus 4. So 5 into 10 is to minus 4. And इसका भी square. Oxygen के कितने moles हैं? 1.01. Oxygen 1.01 over 40. क्योंकि हमने concentration निकालनी है, don't forget. So 1.01 over 40. Make sure कि आपका volume decimal में ही हो. So 0.0252. Do the maths everyone. Let me know the Kc and the units. अभी units भी लिखते हैं. शाबाश. क्या आंसर आएगा? आगे आंसर जो भी आना. 3.883. Make sure कि आप इसको check भी कर लो. 3.88 into 10 is minus 5. This is what's our matrix for. Okay, let's write the units. तो देखो सब लोग मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं. मोल पर डीएम क्यूब ऊपर आ जाएगा स्क्वायर. जहां जहां आपकी कोई भी वैल्यूज है, सिर्फ अंदर वाली वैल्यूज पे मोल पर डीएम क्यूब लिखते हैं. अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर से कैंसिल हो गया. सिर्फ यही बच जाएगा ना नीचे. ये ऊपर जाएगा तो मोल -1 हो जाएगा और डीएम +3 हो जाएगा. ऐसे ही होगा. तो वो स्क्वायर तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. यस और नो? यस. सो जल्दी से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. कोई थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन ढूंढते हैं. एंड लेट्स डू. ये 3 और 4 क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई वांट एवरीवन टू ट्राई. इसमें आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का चलिए ये वाला Sir, can you do a Hess law question? Hess का क्वेश्चन ये वाला कर. An important reaction of CHCl3 is the manufacture of I don't know what. Using the following reversible reaction, we are forming this ajeeb si cheez. Use the data to calculate the enthalpy change of reaction for the formation of. Whenever it's about formation, we always do enthalpy of the products minus enthalpy of the reactant. This is the formula for the formation. If you are given with the formation of तो ये formula हमने लिखा. अब इसमें तो बहुत आसान है. Products क्या है? CH. So we know what CHF2 is. That is -4H2.8. और एक ही मोल बन रहा है. मेक श्योर कि आपने बैलेंस इक्वेशन वाले मोल लगाने. इसका एक ही मोल बन रहा है. इसके दो लोग बन रहे हैं. HCl की एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव. सो
इसमें मैं लिखूंगा प्लस, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स को मैं लिख रहा हूँ, और नेगेटिव 92.3 टाइम्स ब्रैकेट होगी गोज फॉर द प्रोडक्ट्स, माइनस रिएक्टेंट्स क्या है, CHCl3 which is negative 1032 प्लस HF की क्या है, नेगेटिव 273.3 times 2 because we have 2 moles of HF. बस मैथ्स कर लो, आगे आंसर आ गया फॉर द रिएक्शन। क्या आंसर आएगा? इसमें क्यों ड्रॉ कर सकते, सारे तो डाटा गिवन है, आप क्यों नहीं सीधे में डालना, खुद को दियर एग्जामिनर कर लो, ड्रॉ से भी आ जाए सीधे, जब भी फॉर्मेशन लगाओ सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। सर कभी कभी साइन क्या आंसर आया? तो फिर हाँ विदाउट ड्राइंग फार्मूले आपको मैं 3-4 बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में ना, मैं आपको फार्मूलाज बताऊंगा, बस वो 3-4 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, कोई साइन से नहीं, बस वो फार्मूलाज अप्लाई करो। जहाँ A2 में आएगा, जहाँ A2 में आप आएंगे ना इंशाल्लाह, वहां पे फार्मूलाज हमें चेंज करने पड़ेंगे, तो वहां पे हम आपको बताएं क्या पंगा कर लिया सबने ये वाले। यस, क्या आंसर आएगा? मैं ज़ूम कर रहा हूँ, क्या आपने कर रहा जो भी मैं जल्दी से बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन करवा देता हूँ आपको, इसके बाद ब्रेक पे, लेकिन आपने ये कंप्लीट करनी है। अब हमारी सिर्फ एक डिटेल सेशन रह गया है ऑन इनऑर्गेनिक एंजाइम, सो वो भी इफ नॉट टुमारो, मैं आप लोग ऑफ कोर्स आपके एग्जाम्स भी हैं तो आप लोगों की अवेलेबिलिटी पे मैं वो भी एक 2 आवर्स का ग्रैंड सेशन रखेंगे हम, इसमें हम पूरा इनऑर्गेनिक रिवाइज करेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व एटलीस्ट 6 ग्रैंड सेशन फॉर डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द 6 ईयरली पेपर्स इंशाल्लाह। आई एम श्योर अगर आप खुद भी इतनी एफर्ट कर रहे हैं जितनी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो वी कैन हैव क्लास टुमारो, डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी। मुझे लगता है कि आप लोगों का डे आफ्टर टुमारो कुछ A-levels के बच्चों का पेपर है, सो उनके लिए भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। The Haber process is usually carried out at temperature approximately 400, presence of catalyst. By the way, we use iron as a catalyst, iron oxide. Yes, हम कर सकते हैं। आजकल मैं A-levels के लिए अवेलेबल हूँ सारा दिन, दिन में भी all schools and academies and everything and online, यहाँ पे भी आते हैं। 2 levels के बच्चों का मेन पेपर हो गया, ATP में भी उनको टेंशन पड़ी, बट उनके भी डिफ्यूज एग्जाम्स हो रहे हैं। The Boltzmann distribution of the mixture of nitrogen and oxygen at 400 is shown. EA is the activation, you can say EA. The particles have energy greater than activation energy. Only these particles will do successful collisions, and only those particles will form the products, right? Use the same axis. Sketch a second curve to indicate at a high temperature. अभी कर देते हैं गोरे अंकों, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, पीक विल गो लिटिल फॉरवर्ड एंड लिटिल लो। आई डोंट नो, मैंने सही ड्रॉ किया ही नहीं, मैंने पेंसिल जरा दूसरी वाली सिलेक्ट की। या सो नाउ एट हाई टेम्परेचर, इसको लेबल भी कर देते हैं, एट हाई टेम्परेचर मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन। लेकिन पीक कम हो गई, तो उस दिन मैंने पूरा 1 आवर लगाया था कि जब आप टेम्परेचर हाई करते हो तो द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स विद मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कम हो जाएंगे। सो नाउ मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इंक्रीज हो गई। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the greater number of the highest number of particle in Boltzmann distribution, but number of particles कम है। यहाँ पे लो टेम्परेचर पे Boltzmann most probable एनर्जी कम थी, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा थी। दिस शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बस इसको करें, इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन है। प्लीज मेक श्योर इसको कल से पहले आप पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर लें, और फिर इंशाल्लाह हम इनऑर्गेनिक करेंगे एक क्लास में, एंड देन वी विल resume our yearly classes. So if you have any question, please. Sir, can we have a session for moles? For moles? Yes. Yes, we can do. मैं बल्कि I think मैंने इसमें कोई क्वेश्चन ऐड किया हुआ था, I don't know, आज मैंने देखा बड़ा डिटेल क्वेश्चन। Also for Hess cycle, ये वाला सवाल तो सिंपल सा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स Hess cycles के सवाल होते हैं, ओके, सो मैं अभी कहता हूँ, ये करते हैं कि हम कोई एक वर्कशीट में बनाता हूँ एक आध दिन में, आपने इनके लिए कोई जरा रीसेंट क्वेश्चन से इसमें ये दोनों चैप्टर जो आपने मेंशन किए हैं उसके ऐड
आमना मुझे अभी टाइम नहीं मिला उसको चेक करने का, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। आपका डे आफ्टर टुमारो है इन लोगों का, तो इंशाल्लाह जो मैंने कहा है प्रॉब्लली वही आएगा। और यस, एंथैल्पी चेंजेस, रिडॉक्स एंड सॉल्ट, सो मेक श्योर आप उसको सब रिवाइज करें। एंड यस यस उसी का कल वाला इनका कल। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।